CM Garland's female NDA candidate, action sparked mental health speculation. Prashant Kishore launches scathing attack on BJP, alleges 3 candidates withdrew due to the BJP pressure. Tejasvi Yadav campaigns against his own party candidate. Dashrath Manjhi's son Bhagirath denied Congress ticket from Barachatti, questions Rahul Gandhi's promise. Pappu Yadav calls Bihar Deputy Chief Samrat Chaudhary ignorant and foolish. Hello and welcome to Bihar Election Tracker, your go-to source for all key updates as the state moves toward a high-stake assembly election. I am Muskan, bringing you the latest from the campaign trail. Let's dive into the details. With just 2 weeks left until Bihar votes, politics in the state is heating up. This time, it's Chief Minister Nitish Kumar's health that has taken center stage again. A video of the 74-year-old JDU chief has gone viral on social media, showing him garlanding a woman during an NDA public meeting, an act that's now drawing sharp reactions. In the clip, Nitish Kumar is seen greeting a woman on stage. As he reaches out to a place to garland around her neck, JDU's Rajya Sabha MP Sanjay Jha steps in, seemingly asking the Chief Minister to hand it over instead. Nitish Kumar lowers his hand, then suddenly puts the garland around the woman's neck. As the crowd cheers, the Chief Minister says on the microphone, and I quote, "Ye gajab aadmi hai bhai, he is quite a man," and appears to be rebuking Sanjay Jha for trying to hold his hand. Tejasvi Yadav posted the viral video and borrowed the Chief Minister's word for the caption, "Ye gajab aadmi hai bhai." If the Chief Minister is healthy, why is he behaving like this after reading a written speech? Moving on, Jan Swaraj Party Chief Prashant Kishore has accused the BJP of using intimidation and pressure tactics to force Jan Swaraj Party candidates to withdraw their nominations. While addressing a press conference in Patna, Prashant Kishore claimed that 3 of his party's candidates from Danapur, Brahmapur and Gopalganj were coerced into withdrawing the race under threats, family pressure or inducements. He said, and I quote, "The BJP has built an image that no matter who wins, they form the government. The NDA is terrified, not of Mahagathbandhan, but of Jan Swaraj, because this time people have a new option." Prashant Kishore alleged that in Danapur, candidate Mutur Shah went missing after filing his nomination. BJP leader accused RJD supporters of abducting him, but Prashant Kishore showed a photograph claiming it proved Mutur Shah's proximity to top BJP leaders, including Amit Shah and Dharmendra Pradhan. देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए, आप लोग आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जन स्वराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू जन स्वराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जन स्वराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जन स्वराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जन स्वराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है, उसी का नतीजा है। Prashant Kishore has said his party will approach the Election Commission,
but remains skeptical, claiming that the EC will do what the government wants. With Bihar's election campaign heating up, the opposition alliance is struggling to stay on the same page. In a rare and telling twist, RJD's Tejasvi Yadav now finds himself campaigning against his own party's candidate in Gaura Bauram, a fallout of the Mahagathbandhan's messy seat-sharing deal. Mahagathbandhan is spilling out into the open. RJD, Congress and left parties are clashing in at least a dozen constituencies, each fielding its own candidates. In around 12 seats, it's RJD versus Congress, or left versus RJD, or even left versus Congress can be seen, which is a complete electoral tangle. And as this infighting intensifies, it's not just seats that the opposition risks losing, it's also its credibility. मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा जहां पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। मतलब सीटों के चयन में समझ में आ सकता है कि शायद विवाद हो, पर अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। और ऐसे में अगर इस भ्रम में है महागठबंधन के लोग कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाएं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडली फाइट, आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन ने हम लोग को कई ऐसी सीट जो संभवतः हम लोग के लिए मुश्किल हो रही थी उस पर भी वॉक ओवर दे दिया। In Gaya's Barachatti constituency, Bhagirath Manji, son of legendary mountain man Dashrath Manji, has voiced strong resentment after being denied a Congress ticket, despite what he says were assurances from Rahul Gandhi himself. Earlier this year, Rahul Gandhi had even visited Bhagirath Manji's home in Gayaji, fueling speculation that he would be the Congress candidate from Barachatti. But the final candidate list tells a different story. The RJD, which is also Congress's key ally in the Grand Alliance, has instead fielded Tanushree Manji from the same seat. The decision has sparked fresh tensions within the alliance, highlighting the growing unease as Bihar heads into a crucial election season. टिकट नहीं मिला, हम लोग 4 दिन रहा दिल्ली में, 4 दिन रहा, टिकट तो नहीं मिला। टिकट के माध्यम से सब कागज तो लिख पढ़ के भेजा दिए, बाकी टिकट कन्फर्म कर दिया तो क्या करें, मिला नहीं ना टिकट। हम राहुल गांधी साथ में बैठा, हम कहा कि देखिए कहीं से सीट हमको चुनाव से लड़ाइए, तो राहुल गांधी बोला कि हाँ देंगे। तो हम कहा देखिए बाराचट्टी है, चाहे बोध गया है, कहीं से टिकट हमारे दे दीजिए। राहुल गांधी हम साथ में न बैठा। Independent MP from Purnia, Pappu Yadav, has launched a sharp attack on Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary over his recent remark. Speaking to the media in Patna, Pappu Yadav said, and I quote, "Samrat Chaudhary never talks about Bihar's real issues. Migration, investment, education and employment remains exactly where they were." He further added, and I quote, "Rahul Gandhi connects directly with common people, while the BJP is only engaged in the politics of power." Following his statement, political temperatures have risen in Bihar once again, with verbal clashes erupting between the BJP and Congress camps. For daily in-depth updates on everything shaping Bihar's political landscape, stay tuned to NDTV's Bihar Election Tracker.